directional derivative. Directional derivative. So just for review, we considered this f as a function which is defined from some open set of Rn to R, and this u should be open. U should be open. So this is your say u, and take a point A and a direction V, and then we consider this ratio fa plus tv minus fa and divided by t, and its limit t tending to 0. And we call, if this limit exists, we call this quantity as the directional derivative of f at the point A in direction of V. And in particular, we discussed that if this V is your ith basis vector, that is this 0, 0, 1 at ith place, and again then 0, 0, 0. In particular, for I is equal to 1, it is first place 1 and rest 0, I2 second 1 and rest 0, and so on. So the directional derivative in direction of EI, this FA is nothing but the partial derivative of f along the ith coordinate axis, that is xi. In particular, if your f is a function of two variables, say x and y, then the directional derivative along this E1 is del f upon del x, and directional derivative along E2 is del f over del y. So the proof is very simple. You can do yourself. It's not very difficult. You have just to explore this in component, and so that this becomes, suppose A is A1, A2, AN. Maybe I'll just write shortly. So suppose your A is say A1. Maybe I will write in upper notation, upper suffix. So suppose this A is join होना चाहते हैं. Yeah. So suppose your A is say A1, A2 dot dot AN. So this is a point in U. This is a point in U, and this V is a vector with components say V1, V2 dot dot Vn. So in particular, if your V is say EI, that is the ith component is 1, this ith place is 1, and the rest are 0. So what is A plus TV? So A plus TV will be this A1, A2, and AN, and plus T times 0, 0, 0, and at ith place 1. So what is this? So this will be A1, A2, and in ith place it will be AI plus T, and again rest term will be AI plus 1 and so on, and last term will be AI. So now when you put the value here, you will get this F A1 dot dot AI plus T, and the last term will be AN, and minus F again A1, A2, AN, and divided by T, and limit T tending to 0. And you remember the formula for partial derivative. So all the coordinates are same: A1, A2, AI minus 1, A1, A2, AI minus 1, again AI plus 1 to AN, and AI plus 1 to AN. Only there is a change in ith component. So AI plus T, and here is AI divided by T. So taking all coordinates remains same, only there is a change in ith coordinate.
So this is nothing but your partial derivative along ith component. So this is del f upon del I at the point A. So the proof is very simple. So the directional derivative in some sense is you can say a generalization of this partial derivative. But as I told yesterday, the main drawback of this directional derivative is that uh, oh, so many people are interested. Okay. आप लोग याद दिलाते रहिए, अगर कोई बीच में ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग याद दिला देंगे, अदरवाइज काफी लोग वेट करेंगे. एंड जब आप कुछ लिखते हैं व्हाइट बोर्ड पे तो वेरी डिफिकल्ट टू सी दैट समवन इज रियली इंटरेस्टेड. Yeah. So the drawback I was telling yesterday, as you expect that if a function is differentiable, at least it should be continuous. क्योंकि हमारा एक फीडबैक है वन वेरिएबल कैलकुलस से कि अगर कोई फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होना चाहिए. और ये ड्रॉबैक कह सकते हैं आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कि ये पॉसिबल हो सकता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे इवन इन ऑल डायरेक्शन, बट फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस. सो देयर आर सेवरल एग्जांपल्स, मे बी आई विल कोट जस्ट वन. सो you can think of this example. So maybe you write your f is a function from R2 to R defined as this fxy is equal to say 0 when xy equal to 0 and is equal to 1 when xy is not equal to 0. Right? Xy is equal to 0, then 0, and xy not equal to 0 is 1. So you can see that at least the partial derivative along x-axis and along y-axis exist at origin. You see here, what is your partial derivative along x-axis? So what it means that on this domain xy is equal to 0 means on x-axis and y-axis this function is 0 and otherwise it is 1. So here it is 1, it is 1, 1, 1, but along the coordinate axis it is 0. So when you come along coordinate axis, it's a constant function. Along y-axis, it's constant function. So therefore, this fx, fy both exist, and 0, 0, fy at 0, 0, both exist and equal to 0. But it's very easy to see that it's not continuous. It's not continuous because at all point it is 1 and suddenly it becomes 0. Suddenly on this coordinate axis and at origin it becomes 0. So therefore, it's not continuous. You can write precisely, maybe in terms of epsilon and delta. Sir? Yeah. So someone wants to join this. Okay. Maybe you can write one more example. So this example is clear to everybody? Yes, sir. Yeah. So the next example, yeah, okay. So next example, maybe you define your, again, this is my first example, this is second example. And you see here again, f is defined from whole R2 to R. And it's defined like this. So is equal to this x square y upon x to the power 4 plus y square when x y not equal to 0, 0 and is equal to 0 when x y equal to 0. सर कोई ज्वाइन होना चाहता है? Yeah. So consider this function which is defined on the whole R2, but at
non-zero point, its value is given by this much, x square y over x to the power 4 plus y square, and is equal to 0 when point is 0. And you can show that its all directional derivative exist. Its all directional derivative exist. So show that maybe for simplicity you only show that this fx and fy exist. Fx fy exist at origin. And if someone really interested, you can also calculate this directional derivative of f at 0 0 in direction of v, where v is, you can take some unit vector, say hk. You can also calculate this directional derivative at 0, and all these exist. However, this f is not continuous. F is not continuous at origin. तो हमें पूरा विश्वास है कि ये एग्जाम्पल आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो किसी ट्यूटोरियल सेशन में इसको अशोक क्लियर करेंगे आप लोगों को. सो दिस विल बी डन बाय tutorial. So this is the kind of function you see that this function has all directional derivative at origin. इसके सभी directional derivative exist करते हैं इस origin पे, लेकिन ये function जो है वो origin पे continuous नहीं है. तो फिर ये directional derivative बहुत कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो कि हमें लगता है कि वो डायरेक्शन जो डेरिवेटिव से कम, तो इट शुड नॉट बी कॉल्ड एज यू कैन से डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, बिकॉज यू नो डेरिवेटिव शुड इम्प्लाई कंटिन्यूटी. सो यू नीड a better definition of, just a motivation I'm saying, it's not precise, but it's just for motivation that it should not be a kind of derivative. Sir, so you should define derivative. और कोई ज्वाइन करना चाहता है? सर इसमें से y इज इक्वल टू mx लेके सॉल्व करेंगे. आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. किसको आप सॉल्व करना चाहते हैं? ये इस v के अलोंग जो डेरिवेटिव आप निकालना चाहते हैं? नो सर, फॉर कंटिन्यूटी. तो फॉर कंटिन्यूटी सर आप लोग बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे इक्वल टू mx स्क्वायर से होगा. y इक्वल टू mx स्क्वायर. आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कर सकते हैं, बस ये आपको दिखाना होगा कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, राइट? तो इसका एक जो सिंपल वे है कि आप किसी भी तरीके से ओरिजिन पे पहुंचिए, किसी भी तरीके से, वो चाहे स्ट्रेट लाइन के अलोंग पहुंचिए, चाहे किसी कर्व के अलोंग पहुंचिए, जिस तरीके से आप ओरिजिन पे पहुंचे, जो फंक्शनल वैल्यू है वहां पे अप्रोच करना चाहिए. ये जो फंक्शन आपको नॉन जीरो पॉइंट पे जो फंक्शन है, तो इसके थ्रू ये जो है वो, और फंक्शनल वैल्यू 0 पे 0 है, तो जब आप देखेंगे कि ये जो फंक्शनल वैल्यू है, जैसे अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन अगर आप ले लीजिए, तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन के अलोंग कैलकुलेट करेंगे तब तो आप ओरिजिन पे पहुंचते पहुंचते 0 पे पहुंच जाएंगे. आपको कुछ और कोई कर्व लेना पड़ेगा, शायद किसी कर्व के अलोंग जब आप ओरिजिन पे जाएंगे तो शायद ऐसा होगा कि आप देखिएगा कि वो 0 पे नहीं पहुंचेंगे. तो इस तरह से चूंकि यस, जो भी कर्व होगा, जो भी जैसे आप, इट इज अप टू यू. मैं कोई फिक्स बात नहीं कर रहा, यही कोई भी कर्व हो सकता है. तो किसी भी डायरेक्शन से अगर आप पहुंचे, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो पैराबोला हो, चाहे वो सर्कल हो, तो अब इस केस में क्या होगा वो मुझे नहीं पता, आपको चेक करना पड़ेगा. शायद पैराबोला में एम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, जो भी हो, जो भी हो. हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी रास्ते से अगर पहुंचिए, तो जो fxy, this fxy, when this xy approaching to 0,
whatever path you choose, this should be equal to f00. अगर ऐसा है, अगर ये यूनिक लिमिट f00 पे रख रहा है तो हम कहेंगे कंटिन्यूअस है, और यदि ऐसा नहीं है तो नहीं होगा। शायद इसमें ऐसा ही आप लोगों ने जो पढ़ा है कि आप लोग एक फैमिली ऑफ पैराबोला लेते हैं, शायद उस फैमिली ऑफ पैराबोला के अलांग जब आप ओरिजिन पे पहुंचते हैं तो ये वैल्यू यूनिक नहीं होती है, एंड दैट इज द लॉजिक टू से दैट द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। इट्स ओके, इट्स फाइन। Maybe Ashok will explain in next tutorial. So it is okay to everybody? Yes, sir. Because now I am Yes, going. sir. Yes, sir. Now I am going to define a stronger version of differentiability. एक हम ऐसा वर्जन डिफाइन करने जा रहे हैं जिसको एक्चुअली हम कहेंगे कि हाँ ये डेरिवेटिव है, और उस केस में आप ऐसा देख पाएंगे कि जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो निश्चित रूप से कंटीन्यूअस होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम वन वेरिएबल कैलकुलस को थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि सपोज योर फंक्शन f इज ए फंक्शन which is defined on some open interval, say a b to r, and I take a point x in ab, and you say that this f is differentiable if this limit exists, this fx plus h minus fx and upon h, and take this limit h tending to 0, and you call it as f dash x. If this limit exists, you call this the derivative of the function. Now I'm just modifying this expression in this form, this fx plus h minus fx, and I'm just multiplying both sides by h, so that this becomes f dash x into h, and I'm writing this plus rh. All right? And instead of saying that this limit exists, I'm saying that this rh upon h, this rh upon h, if this limit exists, so limit h tending to 0, this should be 0, right? So if you say, maybe you can call here, instead of saying f dash x, you may call as a. So if your function is such that fx plus h minus fx is equal to a h and plus some function which only depend on h, and divide this rh upon h, this is called the remainder term, you can say. This is called the remainder term. So when this rh upon h, limit h tending to 0 is equal to 0, it's equivalent to say that this limit exists when h tending to 0. And in that case, we call this number a as f dash x, and this is called the this differential coefficient. This is the differential coefficient or derivative. We will call here as a differential coefficient, in fact. And instead of saying this derivative as a number, we will say that derivative is actually this linear function which sends this h to f dash x into h. We will say that derivative of this function is actually this linear function which sends h to f dash x into h, right? So for me, the derivative is not simply a number. Derivative at a point is not simply a number, but actually this linear function, which is actually the best linear approximation of the given function in the neighborhood of the point x. Is it okay? So for me, this is the derivative. For one variable calculus, this is the derivative. This h goes to f dash. This is a linear function. एक linear function है. अगर आप कोई function आप इस तरह से define करिए कि जिसकी h पे value है, ये f dash x कोई number है. This f dash x is a fixed number into h, and this is the linear transformation from r to r. So this linear transformation, if you plot the graph of this linear transformation, this is actually the tangent line of the graph of the function at the point x. Maybe you see an example. So if you consider a function, say fx is equal to say x square, so this is a function fx is equal to x square, and if you plot its graph
This is actually a parabola. This is a parabola, the symmetric parabola, in fact. Yeah. And maybe you take a point, say here A, x is equal to A. So this point will be A and FA, or AA square. This point will be AA square. And this is your x is equal to A. So at this point, what is this differential coefficient? If you calculate differential coefficient, this f dash x, this will be this f dash at the point A is simply 2A. So this is the differential coefficient. Now, what is its derivative at this point? So for me, derivative is this function. This h goes to 2A into h. And h goes to 2A into h. If you plot the graph of this function, h goes to 2A into h, this is actually the tangent line to this graph of the function at the point x is equal to A. This will be the tangent line. So the graph of this linear transformation, ये जो linear transformation आपने लिखा है, अगर इस point को origin मान करके आप चाहे तो यहाँ पे एक x axis ड्रा कर लीजिए, y axis ड्रा कर लीजिए, और इसको origin मानते हुए अगर आप इस linear transformation fh is equal to 2ah का अगर आप graph plot करें, so that graph is actually the tangent line to this curve at the point x is equal to A. Is it okay? ठीक है ना? Now I'm going to define. Yes, sir. Now I'm going to define the derivative for general open subset of R. So suppose, so definition. So let U is an open set, is an open set in Rn, and F maps and F is a function from U to say R. Now we say this F is differentiable at a point x is equal to A in U if there exists a linear transformation, say A, capital A, from Rn to R, such that this fx plus you may write you want to add the point A, so you should write A. Yeah, x पे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं. So this x is a point in U. Let us take x as a point in U. So this fx plus h minus fx and minus ah and divided by this norm of h. And here also you can take this modulus. This is a real number, so don't worry about that. And limit h tending to 0. And this should be equal to 0. So this is just you say a generalization of this expression, this RH. Your RH is actually fx plus h minus fx minus a h and divided by h. So if this limit is equal to 0 when h tending to 0, you call this quantity A as the
differential coefficient here, and also here as a linear transformation, you may call this as a derivative of the function f. So you may call this a, this linear transformation a as the derivative of the function at the point x. यदि ये लिमिट 0 हो जाए, यदि ये लिमिट 0 हो जाए, तो हम कहेंगे ये जो a है, this a is nothing but the derivative of the function at the point x. This is the derivative, and we say that this f is differentiable. We say this f is differentiable if this limit exists. More generally, suppose your function, this f is actually a map from open subset of Rn to Rm. So more generally, suppose f is a map from open subset of Rn to Rm. Then we say that this f is differentiable. F is differentiable at a point x in U if there exists a linear transformation. If there exists a linear transformation, say A from Rn to Rm, such that this limit h tending to 0, and now here this fx plus h minus fx and minus ah and divided by this norm of h, and this should be equal to 0. So here you see all the entries in numerator, these are element of Rm, these are vectors. So you have to take the norm of this vector. So norm of this vector will be a real number, and norm of this vector h is a vector in Rn. So you have to take the norm of Rn. So now these two are real numbers. So as this vector h tending to 0, if this quotient approaches 0, we say that the function is differentiable at the point x, and this linear transformation A is called the derivative of the function at the point x. Or you may also call this the total derivative of the function at the point x. Is it okay to everybody? Yes, sir. Yeah. So let us take a simple example. So before giving the example, I just wanted to show a very important result which will be used almost everywhere. So I'm going to show that whenever this function is differentiable, this linear transformation, that is its derivative, is always unique. ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है वो अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ए है तो फिर साथ ही साथ एक दूसरा भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिले जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करे. इट ऑलवेज, व्हेनेवर इट एग्जिस्ट, इट इज ऑलवेज यूनिक. तो इसका एडवांटेज ये होगा कि जब भी हमको किसी फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना होगा और हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स मिल जाए या कोई भी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम गारंटी के साथ कह सकते हैं हाँ साहब यही इसका डेरिवेटिव है. हमको फिर दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं तो फिर दूसरा बंदा को कहेगा साहब अच्छा ये भी डेरिवेटिव है, तो हम एक मैट्रिक्स दे रहे हैं इसको वेरीफाई कर लियो, वो भी डेरिवेटिव होगा. तो whenever a matrix or a linear transformation satisfy this condition, it's always unique. So this lemma I am going to prove, and then I will give an example. So maybe you can also call instead of lemma, it's kind of theorem. So the derivative
So the derivative of a map f from u Rn to Rm at any x in u is unique whenever it exists. जब भी एग्जिस्ट करेगा तो ये यूनिक होगा. Proof. So if possible, let this f dash x is equal to say a1, and also at the same point this f dash x is equal to a2. Suppose these are two linear transformations, a1 and a2, and these are two derivatives of the function at the same point x. Okay. Now consider this linear transformation B, which is the difference of the two linear transformations a1 and a2. So a1 minus a2. And this a1 minus a2. Now consider this. Basically, I wanted to show that this BH upon H, this tending to 0 as H tending to 0. This is my aim. So for that, so let us start from this BH. Whenever I am writing mod, this is actually a norm. This is actually a norm in the range space. So this is from Rn to Rm actually, Rn to Rm. So this is actually a norm in Rm. आप चाहे तो norm लिख सकते हैं, no problem. We think of a norm. So now this BH, this is actually a1 minus a2. So and this is a1h and minus a2h. Now what is your a1? A1 is, if we explore it, this is, so instead of explore this a1, I'm because I have to manipulate something, so I'm adding and subtracting this fx plus h minus fx. So I'm adding this. Oh, just a minute. Okay, so before dividing, I will apply this triangular inequality. So this will be less than equal to this norm of this first thing and plus norm of the second thing. Okay. And now I am dividing by this norm of h. So this is your BH. And now if you divide this BH by norm of h, this is less than equal to this first expression divided by norm of h and plus second expression, this divided by norm of h. But you know, this quantity, as this function is differentiable, when limit h tending to 0, this quantity is equal to 0.
So can you fill up this inside this norm term? You have to just repeat this term is here and the same term is here, and similarly this term is here and the same term is here. So just I'm saving the time and you just repeat it here. So this term, because the function is differentiable, this term will be 0 and this term will be 0 as h tends to 0. So taking limit h tending to 0, you have this norm of bh and divided by norm of h, and this is equal to 0. Taking h tends to 0. ओके सर प्लीज एक बार बता देंगे कि इसके BH by H के 0 होने से डिफरेंशियबिलिटी का कैसे हो जा रहा है? नहीं, अभी तो केवल हमने ये क्लेम किया था कि हम कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम कुछ दिखा रहे हैं कि BH upon H 0 होने जा रहा है। यहाँ तक तो ठीक है ना। बस ये आप पहले समझे कि यहाँ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आपको है ना अभी तक। अभी अपना एम नहीं दिखा पाए। हमको दिखाना है कि A1 is going to be equal to A2। अभी हमने कहाँ दिखाया A1 equal to A2 होना है। हमने कुछ दिखाया है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है इससे कि A1 A2 के इक्वल होने वाला है, राइट। सर इसके ऊपर में आपने जो डेफिनेशन बताया था उसके मतलब ये जो ऊपर आपने लिखा है नॉर्म में वो इज इक्वल टू 0 किया है। हाँ, चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बिकॉज दिस फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल, सपोज दिस f इज डिफरेंशिएबल, इट इज गिवन दैट दिस f इज डिफरेंशिएबल, तो f इज डिफरेंशिएबल का मतलब f डैश x इज इक्वल टू a1, राइट। और ठीक है, अगर संभव है कि इसका दूसरा डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है तो f डैश x इक्वल टू a2 मान लिया जाए। तो चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन a1 है, तो ये चीज 0 हो जाएगा। दिस fx plus h minus fx minus ah divided by norm of h limit h tending to this is going to be 0। और यही तो है आपका एक्सप्रेशन। ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है यही तो है, fx plus h minus fx minus a2h और minus a1h। एक जगह a2h है, दूसरी जगह a1h है। क्योंकि दोनों ही फंक्शन, क्योंकि आप मान के चल रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये भी मान के चल रहे हैं इफ पॉसिबल a1 और a2 दो इसके डेरिवेटिव हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। एंड देयरफॉर दिस bh upon h is less than equal to 0, but because it's always positive, so therefore it has to be 0. So bh upon h is equal to 0, right? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नो सर। ओके, नहीं सर। नो सर। हाँ, कुछ पूछ रहा था कोई? हाँ, कोई कंफ्यूजन था किसी को क्या अभी भी? सर पीछे वाले स्लाइड में RH by H वाला टर्म एक बार फिर से थोड़ा कंफ्यूजन रह गया थोड़ा सा। कौन सा? इसमें ये नहीं सर, वही सर। हाँ, इसमें क्या कंफ्यूजन था? इसके पीछे वाले स्लाइड में सर। हाँ, यस सर, वहाँ RH by H वाले टर्म को एक बार फिर से बताया था। हाँ, देखिए ये एक्चुअली ये जो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन आप जानते हैं कि fx plus h minus fx upon h लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे अगर 0 है, h टेंडिंग टू 0 पे अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है और ये लिमिट f डैश x के इक्वल अगर है तो, ठीक है, उसी को हम फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं। हमने क्या किया कि इसको h से मल्टीप्लाई कर दिया और साथ साथ एक टर्म यहाँ पे रख लिया, समथिंग मान लीजिए कुछ RH हमने रख लिया, ठीक है। तो बेसिकली आई एम टेकिंग दिस टर्म एज h से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमने RH रखा है, सो दैट दिस fx plus h minus fx इज इक्वल टू f dash x into h और प्लस एक टर्म हमने रख लिया है RH। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है fx plus h minus fx इक्वल टू f dash x into h और प्लस RH। लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि जब h टेंडिंग्स टू 0 है तो RH को 0 होना पड़ेगा। यही कंडीशन लिखा है कि जब h टेंडिंग्स टू 0 है तो बेसिकली टेंडिंग टू 0 साथ साथ ये कंडीशन होना चाहिए कि आफ्टर डिवाइडिंग बाय h दिस राइट हैंड साइड लिमिट एग्जिस्ट एंड दैट इज इक्वल टू f डैश x, सो देयरफॉर दिस RH अपॉन h जब h से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा RH अपॉन h। तो RH अपॉन h का लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 पे 0 हो जाएगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे लिख दिया गया है। तो बेसिकली दीज टू कंडीशंस आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ईदर यू से दिस लिमिट एग्जिस्ट h टेंडिंग्स टू 0 or you say this RH upon h tending to 0 this limit exists, both conditions are equivalent, ठीक है। हेलो सर। हाँ
सर ये जो आपने h टेन टू f प्राइम x इंटू एच लिखा हुआ है, ये कैसे आया? नहीं, आप सिंपल इसमें h से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। h से जो सर ये जो आर एच लिमिट h टेंड्स टू 0 आर एच अपॉन एच इज इक्वल टू 0 के एरो बन के उधर वो नहीं लिखा हुआ आपने जो ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है? ये h goes to, not tends to, h goes to f dash x। ये हमने कहा ये एक फंक्शन है, दिस fx, दिस इज एक्चुअली ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ जो मैंने कहा था ये बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन fx इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट x। जैसे अगर आप दूसरे शब्दों में थोड़ा सा और अगर आप लोग याद करें, अगर अपना टेलर्स थ्योरम याद करिए, तो टेलर्स थ्योरम में क्या है कि fx प्लस h इज इक्वल टू fx प्लस, ये बेसिकली ये फर्स्ट ऑर्डर टर्म है, f डैश x इंटू h। ठीक है, अगर और भी सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगा f डबल डैश x इंटू एच स्क्वायर अपॉन 2 प्लस डॉट एंड सो ऑन। सो दिस इज एक्चुअली the linear approximation of the function in the neighborhood of the point x। तो ये जो एक्सप्रेशन ये तो कांस्टेंट है, f डैश x तो कोई नंबर मिलेगा 2 3 4, जैसे यहाँ पे आपने देखा था ना पैराबोला के लिए ये 2a आपको मिल गया था, तो h goes to 2ah। ये बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 2x, और आप देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2ax ही जो है इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है। तो बेसिकली डेरिवेटिव हम ये कह रहे हैं कि डेरिवेटिव जो है वो जो कि हम केवल नंबर जानते थे, वो बेसिकली नंबर जो है वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। इसी को मैं बार बार प्रिसाइज करना चाह रहा हूं कि वो इसको आप एक नंबर समझे, बट दैट इज नॉट द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज एक्चुअली अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, डेरिवेटिव इज एक्चुअली अ लीनियर मैप, इज अ लीनियर अप्रोक्सीमेशन। जैसे कोई भी एक कर्व दिया गया है, ये जो फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन के ग्राफ का किसी पॉइंट के नेबरहुड में जो बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन है, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लीनियर सम अप्रोक्सीमेट का, जैसे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड आप चाहे यहाँ पे कर्व देख रहे हैं, ऐसे ही कोई कॉम्प्लिकेटेड कर्व आप सरफेसेस ले लीजिए, कोई सरफेसेस आप ले लीजिए, तो उस सरफेसेस के लिए जो बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन होगा, दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, राइट। तो जैसे अगर कोई सरफेस आप लेंगे, यहाँ पे आपको बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन टेंजेंट लाइन मिला है, वहां पे बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन आपको टेंजेंट प्लेन मिल जाए। तो इस तरीके से ये तो खैर बहुत ही सिंपल चीजों के लिए है, और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो चीजें हैं उनके लिए भी जो डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को आप ये याद रखें कि डेरिवेटिव इज द बेस्ट लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ द गिवन पॉइंट। उस पॉइंट के नेबरहुड में उस फंक्शन के लिए क्या बेहतरीन लीनियर अप्रोक्सीमेशन है, या जो आप कह सकते हैं कि टेलर सीरीज का जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो क्या है, दैट इज द डेरिवेटिव टर्म। ठीक है, तो इसी को हम हायर, चूंकि हम जैसा कि हमने बताया कि जो ये पहला वाला डेफिनेशन था, इसको हायर डायमेंशन में हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो हमको कुछ एक दूसरा इसका फॉर्म चाहिए जिसको हम हायर डायमेंशन में, जिसको हम कह सकें। अभी हम ये डेफिनेशन देना चाहते हैं कि व्हाट शुड बी द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन हायर डायमेंशन, राइट। सो जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि जो हायर डायमेंशन में डेरिवेटिव का जो एनालॉग है, दैट इज एक्चुअली दिस टर्म a, which is nothing but a linear transformation from Rn to Rn। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि आपका जो फंक्शन f है, दैट फंक्शन इज ओनली डिफाइंड ऑन दिस ओपन सेट U। हो सकता है कि पूरे Rn पे फंक्शन आपका डिफाइंड ही ना हो, एक छोटे से डोमेन पे डिफाइंड है। बहुत ऐसे फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा इवन वन वेरिएबल में, कि पूरे रियल लाइन पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, छोटे से जगह पे डिफाइंड है, ओपन सेट में डिफाइंड है। बट इंटरेस्टिंगली ये जो आपका डेरिवेटिव जो है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो दिस शुड बी डिफाइंड ऑन द होल Rn। तो जो डेरिवेटिव एज ए मैप, दिस शुड बी डिफाइंड ऑन द होल Rn। ठीक है, ये भले ही एक छोटे सेट पे डिफाइंड है, लेकिन जो डेरिवेटिव एज ए मैप जो है ये पूरे Rn पे डिफाइंड होना चाहिए। अभी मैं एक एग्जांपल एक दो बताऊंगा तो आपको और क्लैरिफाई होगा। फिलहाल अभी इसको आप अपने दिमाग में बनाए रखें कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव, यू रिमेंबर दैट डेरिवेटिव इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप बिल्कुल याद रखें कि डेरिवेटिव इज नथिंग बट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपका ओपन सेट ऑफ Rn टू R अगर मैप है, तो a जो डेरिवेटिव होगा इसको आप चाहें तो f डैश x भी लिख सकते हैं, दिस a इज इक्वल टू f डैश x। सो दिस डेरिवेटिव इज अ मैप फ्रॉम Rn टू R। अगर आपका
Rn to Rm अगर आपका फंक्शन है, या उसके ओपन सेट Rn से Rm में फंक्शन है, तो भी जो A होगा ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है Rn से Rm में। ठीक है? ओके। यस सर। So now we have just proved that this limit bh upon h, this is equal to 0 when h tending to 0. ओके। अब इसकी मदद से हम बेसिकली हमको क्या दिखाना है कि b इज गोइंग टू बी 0। अगर हम ये दिखा दें कि b खुद 0 होने वाला है, अगर b 0 हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू a2, और कोई ऑप्शन नहीं है, a1 हैज टू बी इक्वल टू a2। तो फॉर दैट यू हैव टू शो दैट दिस b इज इक्वल टू 0। तो कैसे दिखाया जाए कि b 0 होगा? ये चीज आपने प्रूव कर लिया कि दिस bh upon h limit h tending to 0 is equal to 0. Now how you show that this b is actually equal to 0? कोई बताए? Any hint from you? How to show this b is actually equal to 0? सर यहाँ पे नॉर्म को ब्रेक करके b बाहर निकाल दो। हाँ? यहाँ पे आपका Rn का नॉर्म है, ये आपका Rn का नॉर्म है, और यहाँ पे Rm का नॉर्म है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो BH के m कंपोनेंट हैं, आप चाहें तो H1 H2 Hm लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसके n कंपोनेंट्स हैं। और फिर जब आप नॉर्म लेंगे, जो कि हमने पहले दिन आपको कल शायद बताया था, नॉर्म का मतलब वो स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर xn स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में भी उसी तरह का कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म आएगा, लेकिन उसकी मदद से आपको दिखाना है कि दिस b इज गोइंग टू बी 0। ओके, so what we do, so let us take this h is equal to, h कोई एक वेक्टर है आपका इस Rn में h एक वेक्टर है, और h एक वेक्टर है। तो लेट अस कॉल दिस h इज इक्वल टू, इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर आप ले लीजिए v। तो सपोज v इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग h, so you can write this h is equal to say t times unit vector v, where v is a unit vector, norm of v is equal to 1. Okay, now you put h is equal to tv here, तो ये क्या हो जाएगा, this b into एक b linear transformation है tv and norm of this, and divided by this norm of tv. And this limit, because h is equal to tv and v is a unit vector, v एक fixed vector हो गया, तो now you can write this as limit t tending to 0, right? And this is equal to 0. Now you see this b is a linear transformation, तो t को बाहर कर सकते हैं आप, t को बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा t times bv, t times bv. So this is equal to norm of this t times and bv, where v is a unit vector, and divided by this norm of t into v, and this is equal to 0, limit t tending to 0. अब यहाँ से नॉर्म को t के बाहर ला सकते हैं, mod of t, और यहाँ से भी t को बाहर ला सकते हैं. Now this t will be cancel out, and what will you get? This is simply this bv, and upon here modulus of t into norm of v, but v is a unit vector, so therefore bv is equal to 0. But now you can take this h as arbitrary vector, so v is arbitrary vector, and therefore this b is equal to 0. Is it okay? And this implies this a1 is equal to 8. Is it okay to everybody? Yes, sir. So this is a very simple proof to show that whenever
a function is differentiable, its derivative is unique. तो अब जब भी आपको इसके डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करना होगा तो केवल वो लिमिट आप सेटिस्फाई करा दीजिए कि हाँ साहब एक कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमको मिल गया और हम वहां पे रख करके और सेटिस्फाई करा देंगे। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा तो हम कहेंगे कि बस उसके अलावा और कोई दूसरा डेरिवेटिव हो नहीं सकता। दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो नेक्स्ट टर्न पे हम आप लोगों को सबसे पहले एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेंगे कि अगर कोई फंक्शन f आप ले लीजिए, सपोज f इटसेल्फ इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगर f एक फंक्शन आप ले लेते हैं इस Rn to Rm such that f is a linear transformation. This f is equal to say ax. Then we'll show that ऐसे ही रहने दीजिए कि without writing in the form of ax, maybe you just say that this f is a linear transformation. So if f is a linear transformation, maybe you can try on yourself that this is a simplest but very nice exercise to show that if f is a linear transformation from Rn to Rm, show that its derivative at any point x of Rn is f itself. Show that f dash x is equal to f itself. तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट टर्न पे इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। और बस आपको केवल दिखाना है कि जो a है उस a के जगह पे अगर f लिख दीजिए तो वो अपने आप सेटिस्फाई कर जाएगा। और चूंकि इसके अलावा जब भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा वो यूनिक होगा, एंड देयरफॉर f is the only option because f satisfy the condition of the linear for the derivative of the function, and therefore this is the only option for derivative of the function at any arbitrary point x. तो किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन खुद हो जाएगा। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे अगर आप लोग खुद नहीं कर पाएंगे। So thank you all for joining us. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.